Here we go. So, hello and welcome to my show. And today we are going to discuss a very important topic, that is career in news anchoring. And to speak on this topic, we have a very special guest with us. She's a news anchor associated with Doordarshan. She is Mridusmita Choudhary. Welcome to the show, Mridusmita. Thank you, Heather. My first question to you is that when did you decided to become news anchor? Actually, it wasn't decided as such because while I was pursuing my graduation, it was a time I did my graduation in sociology honors, and during that time, of course, sociology major, matlab, I wanted to go into social works. But during that time, as I did my graduation from Delhi, from Miranda House, so during that time, I had a close association with the channel NDTV, and of course, I was engrossed with the way Barkha that she used to be doing the anchoring, especially during the Kargil war. And Yeah, yeah. since, yeah, Kargil Divas was yesterday, so it is a little bit of a coincidence. And during that coverage that Miss Barkha that she did, so I got a little bit inclination towards the media line, the how it works and whatnot. And that's how the journey actually started, like right from sociology to pursuing my mass communication again in Delhi itself. And that's how my complete career was. My aim was to go into this media line, Heather. So you have seen Barkha Dutt, and after coming to NDTV, you were started working with her as well. So how was your experience? Yeah, that was what can I say? It was a lifetime opportunity that I would say, and I being enthusiast towards this career, and yes, to become a barkhadat, and especially if we talk about Indian women or maybe the ladies in India who are always encouraged and become or maybe who are in the media line or who might have the aspiration to become a media person, that barkhadat have to be she must be playing a little bit of a role, and like almost all of the girls had the aim that I want to become like Barkha, that even now I follow her. And though she is not in the mainstream media, she is into Mojo, Yeah. that's social, this one. So I am a very big fan of hers, and I definitely follow her till now, because there is a lot of thing that we should learn from her. And being a media person, yes, Barkha, that have to be one of the idol to get into this career line. So for the audience, I just wanted to tell them that me and Mridu Smita, we worked together in NDTV. And my story is that when I saw her for the first time, I could not believe, because these were the superstar for us, right? And we were just working for them. I just wanted to know that you did mass communication in the year 2009, 2010. So at that time, that it was a very kind of alien course, because many people don't aware about it. So how did you convince your parents? Yes, that was one big thing that I had to, because definitely being from the middle class, and of course I am from Northeast, that is Assam, and here usually what is the thing, like after pursuing a graduation, they think that we should be settled and kind of a job, like, and being a girl again, they want a very stable kind of a job. And media is that where usually parents or anybody parent would not suggest, and during that particular time, during 2008 and 9, yes, there was a very little scope that people might ask their child, or they want their child to pursue that career, because they were skeptical that because maybe there is no future or such, because that time this big news channels weren't there. And yes, only Doordarshan was the one, and NDTV at that time was one
channel which was actually on the scene. But again, being a girl, there was also a little bit of differences. But thanks to my elder brother, he had he was the one who supported me quite a lot, and he said, like, chalo, you, if you really want to, then you go ahead. And he was the one who gave me the strength to pursue. And yes, he only convinced my parents to let her do what she wants to do. If there is something, we will see it later. Let her pursue what she wants in her life. Yeah, similarly, my story as well. My family supported me in this doing this mass communication. So one day I've decided that I'll do mass communication, and I was just sitting at my place. One of my, father's friend came and visit us. He was asking, "What you will do? क्या करोगे बेटा? Graduation कर लिया है आप?" तो मैंने कहा मास कम्युनिकेशन करूंगा। ये क्या होता है? मास कम्युनिकेशन क्या होता है? हमने तो पहली बार सुना है। अरे ये कुछ इंजीनियर वगैरह कुछ वो पढ़ लेते, लॉ वो पढ़ लेते हैं यार, इसमें क्या करोगे तुम? तो मैं भी सोच में आ गया, या डाउट में आ गया कि वाकई मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एट दैट टाइम पीपल वर अनअवेयर अबाउट इट. So what do you think that it's been 10 years, what are the changes took place in mass communication or on a media field? Yes, there, I would say that have been a vast change, because now actually the students that I tend to, because of my profession also, and otherwise also, I have like friends, or who are in the graduation, those kind of things. So they are quite, they want to pursue media, like, the mass communication line. And mass communication is not only that, yes, only anchoring, or you will be only doing the news stuff. It has got a vast source. Like, you can pursue public relations and advertising. These are the areas where people like our generation, the younger generation, are more into, they're inclined towards, rather than pursuing the typical Indian aim that usually people used to have, that engineering or law or doctor, like those kind of ambition that you usually people used to have. Because they see this media line as a vast source of knowledge, plus they can also enjoy this field. It is not only that the profession is there, but you have a lot of different things that you are getting opportunity to, like meeting various celebrities. Then again, if I talk about, I from the media fraternity, as in like being in the government media, that is also another opportunity I get, especially because there are certain events where not all the media persons are allowed, and only the people like I, from being a person from Doordarshan, then again from PIB, then again from All India Radio, those people are only allowed. Like day before yesterday, the Home Minister of India, Amit Shah ji, was here. So usually there was a little bit of protocol that was followed, and people were not allowed. So, but I had the opportunity to, yes, to cover the event, and those kind of a little bit of different opportunities that I used to get. And yes, the youth, they are more. Because they come to me also, that how you had joined, how did you become a media person. They also asked me in the field. So because there are many who are doing their internship or something like that, or they are still pursuing their graduation in mass communication. So they also have that kind of question, that how is the field right now. And yes, because they because of the pandemic, there is a little bit of a problem that is happening, no doubt about that. But it's a little bit of a limelight you used to get in this media line, actually, Heather. So you talk about the limelight, you talk about the privilege. What are the other aspect of good aspect, if I ask you about news anchoring or a news anchoring job? Good aspect, if I say, because I specially do reporting, and on top of that, I do the news anchoring as well at times. But I mostly have to cover events outside, like covering various events.
I had to go to places like where maybe the ministers they come. Like especially if I talk about, I had to go to Shillong, then I had to go to Kaziranga during the forest minister's visit. Then those kind of that is a really challenging kind of a thing because you know because they are quite fast, those ministers, or they have got their convoys, and we have to reach before time, because before schedule of theirs. And again, connecting because we do it live usually nowadays. Events are live rather than earlier that used to be deferred live, or recording kind of thing. So we used to that is a big challenge to reach the place before them, before the ministers or the personalities who are there, they would arrive. Then again, being from the northeast, that is Assam, again I have to face various challenges, because there are times when there are flood, then again there are road blockage, or any certain kind of uncertain kind of things that I have to, or anybody have to come ahead. So those kind of things are there. And again, your equipment, they might not also work, and you are not in your station, then that is also a big headache during that time. And connectivity is again another issue, because we have to go to remote areas as well. So there maybe the network might not be there. So connecting those equipments, again being in live. Then and nowadays again there is this new thing that we have to connect through Zoom, because that is the go ahead nowadays, because it is really difficult to carry big equipments with you. And we have to be very at times we have to be बहुत जल्दी कभी करना पड़ता है, तो Yeah. अगर कुछ इक्विपमेंट काम नहीं करता है तो फोन से आपको देना पड़ेगा। तो अगेन तब भी ऐसा होता है, कभी कनेक्ट नहीं हो पाता है, तब भी एकदम जो सिचुएशन हो जाती है बहुत हेक्टिक हो जाती है। एंड वी हैव टू हियर लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम पीपल। एंड अरे आपको ये नहीं मिला, आपको वो नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है, उस चैनल को तो मिल गया, आपको कैसे नहीं मिला, ये भी एक होता है। तो हाउ वी cover such things, it is a little bit of things we have to face. A very interesting story, and I can tell you from my experience, I'm into academics since 5 or 6 years. No institute will teach you what you are going through on the field, what you're going through, right? No one. You will understand once you're there on the field. ग्राउंड जीरो पे जब आप Exactly. होंगे तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप न्यूज़ एंकर हैं, ठीक है, वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जब आपने शुरुआत में कोर्स कंप्लीट किया और फिर आपको फेस करना पड़ा? आई एम श्योर देयर वुड बी अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट देन यू गेट इनटू द दूरदर्शन, बट बिफोर दैट व्हाट वर द चैलेंजेस? यस, चैलेंजेस जो किताबों में आपको पढ़ने को मिलता है, जो टिपिकल जो थियोरेटिकल वे में होता है, डेफिनेटली जो अभी आपने बताया, जब आप प्रैक्टिकली जब आप करते हो काम, तब आपको पता चलता है जो चीज़ें कैसे चलती है। तो ऐसा होता है कि फर्स्ट चैलेंज में जब मैं फर्स्ट रिपोर्टिंग करने निकली थी, एंड यहाँ पे मैं गुवाहाटी में जहाँ रहती हूँ, तो यहाँ पे डेफिनेटली यू माइट बी नोइंग अबाउट द टेम्पल, कामाख्या माँ टेम्पल। तो वहाँ पे हर साल एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, अम्बुबासी मेला। तो यहाँ पे ना कि सिर्फ इंडिया से, इनफैक्ट out of from the various parts of the world, people used to come. And that was my first assignment. By God's grace, it is a great opportunity, and वो मुझे मिला first मुझे ओके। करने को। तो तब मुझे चैलेंज ये था, क्योंकि कैसे क्या करना है मुझे कुछ आइडिया नहीं था। क्या इवेंट है, मैं कभी गई नहीं थी, दो मैं असम से हूँ या गुवाहाटी से हूँ, क्योंकि मैं काफी साल दिल्ली में ही रही थी। तो और वहां पे इतनी भीड़ थी, मुझे क्या लेना है, भगवान का लेना है, टूरिस्ट का लेना है, कौन टूरिस्ट है, कौन कहाँ से आया, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं हो रहा था। एंड कवरिंग दैट इवेंट वाज अ बिग, लाइक फॉर मी इट वाज अ बिग चैलेंज। लेकिन कैसे मैंने किया, और क्योंकि वो कंटिन्यूअस मुझे 5 दिन करना था, और उसका ऐसा था कि मुझे अर्ली मॉर्निंग जब एक्चुअली वो 4 दिन भगवान का वो बंद रहता है, दरवाजा बंद रहता है।
तो जी। अंदर भी कुछ नहीं था लेकिन बाहर काफी लोग थे, तो वो उसमें से इंटरेस्टिंग चीजें आपको आइडेंटिफाई करना, ऑब्जर्व करना, फिर उनके ऊपर एक एक स्टोरी बनाना, इट इट वाज अ लिटिल lifetime experience I had. And from that day onwards, every year I had the opportunity, even till now, to cover माँ कामाख्या टेम्पल. एंड इनफैक्ट अमित शाह जी जब आए थे वो भी माँ कामाख्या टेम्पल के ही दर्शन में गए थे परसों, एंड आई वाज कवरिंग दैट इवेंट एज वेल. लेकिन इस पिछले साल से ये रहा है कि पैंडेमिक के वजह से मंदिर बंद है, तो अम्बुबासी मेला भी नहीं हो रहा है. तो मैं ऐसे एक एग्जाम्पल की तरह से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि चैलेंज अगर है तो it is not exactly a particular challenge you have to face, but there are lot many challenges. Again, another I would again for example I would Yeah. say covering flood is a big thing for us, if we are, Yeah. because you are in the place where flood is, every year flood wave आता है. तो फर्स्ट Hmm. वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, इस साल तो देयर वाज अ थर्ड वेव एज वेल. जैसे Yeah. और फ्लड था और इस बार तो कोरोना भी था. तो अगेन Hmm. covering flood, and again undergoing those protocols, maintain करके आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ फ्लड भी है, और आपको वहाँ पे कोविड की वजह से वहाँ पे कैसा चैलेंज है वो भी आपको कवर करना है, और खुद आपको भी प्रोटेक्ट रहना है. तो ये जो चीजें होती है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहता है. एंड बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक जितना भी मैंने कोविड के टाइम में, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेजेस में भी गई हूँ, जितने भी कोविड सेंटर्स है मैं कवर कर चुकी हूँ, जितना भी प्रिकॉशन हो चुके मैं ली हूँ. अभी तक थैंकफुली कोविड आई हैड नॉट हैड. आई एम वैक्सीनेटेड नाउ विद बोथ द डोसेस. बट हमेशा एक दिमाग में रहता है, यू हैव टू बी कॉशियस. जितना हो सके आप खुद को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि यू हैव गॉट योर फैमिली, एंड अलॉन्ग विद दैट अपना जो ड्यूटी है वो भी ड्यूटी भी करना है. सो काफी चैलेंजेस रहता है. बहुत सही बात की। और मैंने देखा कि पेंडेमिक में बहुत ज़बरदस्त काम किया है जर्नलिस्ट ने, और अपनी जान की परवाह ना करके वो सारे विजुअल्स दिखाना, वो सारी स्टोरीज करना, ताकि हम घर पे बैठे सेफ रहें और अवेयर रहें। तो ये कुडोज एंड हेड्स ऑफ टू यू गाइस, यू डिड अ कमेंडेबल जॉब। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो एक न्यूज़ एंकर या न्यूज़ रिपोर्टर को ज़बरदस्त या अव्वल या नंबर वन बना सकती हैं? Definitely you have to be a jack of all trades. You have to know everything. It is not कि आपको सिर्फ पॉलिटिक्स आना चाहिए या आपको सिर्फ स्पोर्ट्स ही आना चाहिए. लेकिन मैं एक ऐसी हूँ, ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंट या रिपोर्टर हूँ जिसको स्पोर्ट्स के बारे में बहुत कम नॉलेज है. लेकिन ऐसा है हम लोग को वो स्पोर्ट्स भी हम लोग को कवर करना पड़ता है, क्योंकि अभी जैसे टोक्यो चल रहा है, तो जी। 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 लवलीना जी, आज तो मैच भी उनका जीता जो उन्होंने। बाउट था, हाँ जो जीता, तो उनका बाउट था. तो जी। व्हाट इज बाई, वी हैड नो आइडिया. बट हाँ। अगेन, क्योंकि वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर जॉनरा दैट यही जॉनरा आपको फॉलो करना है, क्योंकि आपको सब कुछ जानना पड़ता है. तो स्पोर्ट्स के बारे में भी आपको जितना हो सके, एटलीस्ट जितना मिनिमम हो सके, यू हैव टू नो अबाउट इट. एंड अगेन, क्योंकि कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम में आपको बहुत ऐसी जानकारी होनी पड़ी, जैसे डिजीजेस के बारे में जो जी। इन्फेक्शियस है. तो वो भी, जी। जैसे हम लोग को कुछ आइडिया नहीं है साइंस, मतलब साइंस में क्या क्या कितना कुछ हो रहा था, लेकिन वो भी हमको. सो आई वुड से कि लाइक टू बी अ वेरी गुड एंकर और जर्नलिस्ट, you have to know every single thing, like you have to be very thorough. And आज अगर आप ये पर्टिकुलर इवेंट में जा रहे हो, जैसे कोई एक स्पोर्ट्स इवेंट हो, तो उस स्पोर्ट्स के बारे में ये क्या है, कैसे, मतलब कैसे, थोड़ा बहुत तो आपका नॉलेज डेफिनेटली होना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या इवेंट फॉलो कर रही है, कैसे, आपको कुछ आइडिया नहीं होगा. तो दिस इज व्हाट वन मस्ट हैव टू नो, एंड दे हैव टू बी पिन पॉइंटर्स, जो आप खुद अपना उसके ऊपर नॉलेज निकाल के अपने लिए, इट विल बी वेरी गुड टू कवर अ पर्टिकुलर कवरेज. ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने शेयर करी हैं और स्किल्स बताई हैं, और मेरे ख्याल से लोग इसको नोट कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस अनुभव है, और एक्सपीरियंस अनुभव अगर किसी को होता है तो उसकी बातों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए।
जैसे कि हम लोग जब मास कम्युनिकेशन कर रहे थे तो अक्सर बोला जाता था यार रिपोर्टिंग में एक बीट पकड़ लो, स्पोर्ट्स की पकड़ लो, पॉलिटिक्स की पकड़ लो, एंटरटेनमेंट की पकड़ लो। तो आप क्या राय देना चाहेंगे अगर कोई पास आउट हो रहा है या मास कम्युनिकेशन कर रहा है, तो बीट कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कैसे कोई बीट अपनी चूज कर सकता है? यस, ये जो एक बीट अपना होता है तो उसको फॉलो करना, उसके ऊपर मास्टर करना जी। अ, हेलो, हाँ, एम आपकी आई आवाज आ रही है, ऑडिबल? चलिए। जी जी, जी जी। ओके। जी। मैं बोल रही थी क्योंकि पर्टिकुलर बीट फॉलो करना इट्स अ वेरी गुड एडवांटेज फॉर अ पर्टिकुलर जर्नलिस्ट, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स बीट पकड़ते हो तो उस पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है फॉलो करने के लिए। वो एक बहुत वास्ट भी सब्जेक्ट है, उसको टफ वो फॉलो करने के लिए बहुत एक टफ भी होता है, लेकिन कुछ लोग जो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के बारे में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो और ये एक है पॉलिटिक्स जो बहुत हमेशा मतलब लाइमलाइट में ही रहता है। सो पॉलिटिक्स एक ऐसी बीट है जो आपको एडवांटेज भी मिलेगा कुछ भी एक आपको स्टोरी करने के लिए, और ऐसा नहीं रहेगा कि आज इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। इस पे कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, जैसे इलेक्शन हो, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग टाइम में इलेक्शन रहता है, और उस डिफरेंट स्टेट को फॉलो करने के टाइम और एक सेंट्रल जो लोकसभा इलेक्शन होता है तो जो हम्म। वो भी रहता है। सो अगर आप पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर एक स्टेट का, तो उस पे आपका एक नॉलेज रहना बहुत एडवांटेज हो जाता है। देन अगेन अगेन सिर्फ एक बीट पकड़ने से भी, बीट बीट के ऊपर आपका वो रहने से भी इट इज नॉट एनफ। यू हैव टू नो ऑलमोस्ट या। ऑल द एरियाज, ऑल द सेक्टर्स। इट इज नॉट एनफ कि लाइक आप, हाँ मैं मुझे पॉलिटिक्स बीट ही पकड़ना है तो आई एम आई तो दो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज रहता है, लेकिन अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं जो क्योंकि मैं दूरदर्शन में हूँ, हम लोग का ऐसा होता है कि हम लोग एक ही बीट में डेवलपिंग स्टोरी नहीं कर सकते हैं। हम लोग को हर एक कुछ मतलब सेक्टर पे करना पड़ता है, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, ऑफ कोर्स साइंस, साइंस रिलेटेड कुछ भी हो। तो इसीलिए हम लोग का, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, हम लोग का ये रहता है कि हम एक पर्टिकुलर बीट पकड़ के नहीं चल सकते। हम लोग को सब कुछ जानना पड़ेगा, एंड वी हैव टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द इवेंट्स दैट कम्स अहेड ऑफ अस। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर एक ही बीट पकड़ोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, बट डेफिनेटली यू हैव टू नो ऑल द बीट्स। इट विल बी मोर Okay. My एडवांटेजेस। next question to you is, if someone is just pursuing mass communication or just completed the degree, how one can find the job of news anchoring? कैसे news anchoring की job देख सकता है या apply कर सकता है? फिलहाल ये जो सिचुएशन है थोड़ा डिफिकल्ट मतलब है, जो अभी प्रोफेशन, इट इज नॉट ओनली कि लाइक सिर्फ मीडिया प्रोफेशन में ही ऐसा है, बट हर एक जगह है, ऐसा है, चैलेंज है। लेकिन आपको अपना एक टारगेट बना के रखना है कि अभी अगर कुछ नहीं हुआ, एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट विथ फ्रीलांसिंग। इफ नॉट ज्वाइनिंग अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, आपको लिखना अच्छे से आता है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कुछ भी आर्टिकल्स लिख के। आपका खुद एक आइडिया होता है तो कोई भी न्यूज़पेपर को आप दे दो। और ऐसे ऐसा भी रहता है कि फ्रीलांसिंग जो फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्टेड है तो अपना फोटोग्राफी कर सकता है, तो दे कैन गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज आजकल फ्रीलांसिंग का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, रादर देन स्टिकिंग टू वन पर्टिकुलर, नहीं मुझे यही मीडिया हाउस में ज्वाइन करना है या किसी न्यूज इंस्टीट्यूशन में मुझे जाना है, तो वो स्टिक नहीं करना चाहिए। और अगेन ऑफ कोर्स अभी जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उसका बहुत
ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो। अपना खुद एक चैनल खोल ओपन करके उस पे आपने जितने भी व्यूज़ है डेफिनेटली थोड़ा न्यूट्रलाइज Yeah. व्यूज़ ही देना चाहिए Mm. रादर देन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर। Yeah. उस पे थोड़ा आपका प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि अभी द साइबर सेल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इट्स बेटर कि आप स्टिक टू योर ओन एथिक्स एंड follow particular of the country, and that's how the things will you can follow. And we social media is a great platform to get into. Okay. My nice last question to you is, if someone has just passed out from 11th or 12th, and he or she wanted to pursue this career, so what advice you would like to give it to them? Pursue this career since yes I did from after switching to graduation or from sociology I switched on to mass communication. So if you start from graduation level, it will be more advantages for you because जो आप बहुत ज़्यादा उस लेवल पे फ्री हो जाएंगे और ज़्यादा उस जो आपका पर्टिकुलर कोर्स है उस पर ज़्यादा माहिर हो जाएंगे, तो डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा। और अभी जो आप कुछ लोग हैं कि कहते हैं कि ये हम लोग के टाइम पे भी जो बोलते थे कि मीडिया परस्यू करना, मीडिया प्रोफेशन परस्यू करना, इट इज नॉट सो गुड एट दैट टाइम, बट नाउ दैट थिंग्स आर डिफरेंट एंड हाँ बहुत लोग अपना जो आइकॉन है फॉलो करते हैं, तो दे वांट टू गेट इनटू दिस मीडिया लाइन। सो ग्रेजुएशन स्टार्ट करके आप अपना कैरियर चूज कर सकते हैं। और सिर्फ मास कम्युनिकेशन करके इट इज एक ही उस पे आप स्टिक नहीं रह सकते हैं। आप कोई भी लाइन जैसे पब्लिक रिलेशन हो, देन एडवर्टाइजिंग हो, ऐसा भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी है जो आप परस्यू कर सकते हो मास कम्युनिकेशन अगर आप परस्यू करते हैं तो। और मुझे लगता है आप सभी लोग ये बात इनकी सुन रहे होंगे, और आपके जहन में अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। यहीं पे इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मृदुस्मिता जी, आपने टाइम दिया हमें। Thank you for calling me in this platform, Heather, and heartiest congratulations for starting this new initiative. It's quite interesting, and for people who are listening or looking, going through this streaming. बहुत बहुत बधाई हैदर को, क्योंकि एक बहुत अलग ये है, क्योंकि जो कमेंट्री सेक्शन है, जो ऑफ कोर्स इंडिया इज अ क्रिकेट क्रेजी कंट्री, और कमेंट्री एक चीज है जो बहुत ज्यादा मार्केट में अभी इट्स इज अ वेरी दिस वन, बिकॉज मैं खुद अपना वॉइस ओवर देती हूँ काफी डिफरेंट प्रोग्राम्स में, सिर्फ न्यूज रिलेटेड ही नहीं है, लेकिन कमेंट्री एक चीज है जो बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, बहुत कुछ ऐसा चीजें होती है जो आपको बहुत अच्छे से जानना पड़ता है। Definitely Haider is helping with so many big personalities he has been calling in this platform. So definitely people get good help from him if they follow this media platform. आपके ये शब्द तो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। दिस मीन्स लॉट टू मी, बिकॉज दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, एंड entrepreneur life such a difficult life, and when you heard such kind of phrases, you get motivation that you are moving in a right direction. Great, that's good going. अच्छा लगा. Okay, so on this note, we would like to end this show. On my next show, we'll speak to some other personality. Till then, please take care of yourself, and once again, thank you for watching.